हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैरियर कॉरिडोर क्लासेस। तो आज आम आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम जेटी आरएसटी ओटीईटी हो कि ओएसटीटी हो कि सीटीईटी जेकोसी एग्जाम आज आम पेडागोजी गोटे माराथन करवा टॉप 100 एमसीक्यू परीक्षा पढ़ला भली बछा बछा प्रश्न 100टी आज आम डिस्कसन करवा जेटी आरएसटी ओटीईटी आपण मानकर आगू एग्जाम अच्छी तो ता उपरे ओके। तो फास्ट डेरी करानी क्लास स्टार्ट करिया। तो क्लास स्टार्ट करिया पूर्व तुम मानू कहूँ जो मैंने फास्ट टाइम चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी समस्त जाए टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हूँ ओके। तो फास्ट क्वेश्चन देख सोशियो-कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग वाज एडवोकेटेड बाय वाइगोट्स्की कार्ल रोजर्स बर्नर फ्रॉयड। तो आंसर कौन हम समस्ते करने चेष्टा कर। तो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव आम किए कर वाइगोट्स्की कर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन और मोटिवेशन ओनली वन बोथ वन एंड टू ओनली टू नेदर वन नॉट टू। तो आंसर कौन हम लर्निंग डिपेंड्स ऑन तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन आमर बोथ वन एंड टू मैचुरेशन आउ मोटिवेशन दुईटा उपर लर्निंग डिपेंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख CCE स्टैंड्स फॉर। तो CCE रो फुल फॉर्म कौन कम्प्रेसिव कोलाबोरेटिव इवैल्यूएशन कोलाबोरेटिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कम्प्रेसिव चिल्ड्रेन्स इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेसिव इवैल्यूएशन। तो CCE रो फुल फॉर्म है आमर कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेसिव इवैल्यूएशन सामग्रिक और निरंतर शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख फॉलोइंग डेफिनेशन वाज गिवन बाय मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग numbers to individual or their characteristics according to specific rules. Ebel and Frisbie 1990, Ebel and Frisbie 1991, Ebel and Frisbie 1919, Ebel and Frisbie 1980। तो आंसर कौन हबार जल्दी करो। तो 4 नंबर आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम इबेल एंड फ्रिस्बी 1991 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the word lecture is derived from which Latin word meaning that which is read ना Lattre Laren lectus आउ लर्सेन। तो हमारे लेक्चर वर्डटा क्यों लैटिन वर्ड रु डिराइव होइछि यार अर्थ होछि रीड। तो आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी ओके लेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द टर्म लर्निंग स्टाइल corresponds to the understanding that every individuals learn differently, readily, similarly, internally। तो आंसर कौन हम आंसर ऑप्शन नंबर ए हम डिफरेंटली ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Vygotsky believed that learners could achieve much greater level of learning through the help of more knowledge able other, more know other, more knowing other, more knowledge other। तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम मोर नॉलेज एबल अदर। नेक्स्ट देखो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन वेरियस एक्टिविटीज इन एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ओनली 2 होची ट्रू ओनली 1 ट्रू बोथ 1 एंड 2 ट्रू नेदर 1 नॉर 2 ट्रू। तो आंसर कौन हम तार आंसर हम ऑप्शन नंबर ओनली 1 होची 2 फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 2 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नुह। नेक्स्ट देखो फ्रॉम constructivist perspective what is a deciding factor in learning pre assessment score post assessment score previous learning previous experience। तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम प्रीवियस एक्सपीरियंस ओके। नेक्स्ट है आज ए टीचर देयर आर सम कॉमन ग्रुप दैट यू कैन कैरी आउट इन क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन सच एक्टिविटी इंडिविजुअल होमवर्क थिंक पेयर शेयर रोल प्ले आउ जिक्सॉ। आज ए टीचर देयर आर सम कॉमन ग्रुप दैट यू कैन कैरी आउट इन क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन सच एक्टिविटीज। तो इधर कोड़ा हम ना आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए हो इंडिविजुअल वर्कटा होमवर्क। नेक्स्ट देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ्स ऑफ द टीचर्स
ओके मिसकनसेप्शन ऑफ द लर्नर्स कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द सब्जेक्ट पेशेंस ऑफ द लर्नर तो आंसर कौन हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रो तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आंसर होगा हमरो मिसकनसेप्शन ऑफ द लर्नर्स ओके नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रुप वर्क तो इंपोर्टेंट कंपोनेंट कोटा हम ग्रुप वर्क साइज प्रॉब्लम सुपरविजन आउ एक्सपेंस तो इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रुप वर्क आमर आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम साइज ओके नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप लर्निंग एनकरेज इंडिविजुअलिटी क्रिएट्स कंफ्यूजन रिड्यूस पार्टिसिपेशन आउ एनकरेज कोलाबोरेशन तो कोटा आमर एडवांटेज ऑफ ग्रुप लर्निंग रो भीतर कोटा आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम एनकरेजेस कोलाबोरेशन ओके नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हाइंडर्स इंक्लूजन प्रैक्टिसेस ओके सेंसिटाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग पेरेंट इन्वॉल्वमेंट सेग्रीगेशन तो सठिक आंसर कौन हम ना सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम सेग्रीगेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ना दे आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड they have no uniform procedures they are scored on the based of requirement they can be used only on a small group तो standardized test रो फीचर कोडा भितर तो आंसर करो तो बोले स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो फीचर हो जामरो दे आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो असेसमेंट एज लर्निंग occurs when learners progress is monitored by peers learners progress is monitored by teachers learners personally monitor their own learning and learners progress is monitored by parents तो assessment as learning रो occurs केते बेले हबो तो आंसर कोन हबो तार आंसर है ऑप्शन नंबर सी ना लर्नर्स पर्सनली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग ओके नेक्स्ट देखो examine the following statements and identify which of the statement is true learning is possible only when a certain stage of maturation is also reached exercise and training fruitful only when certain stage of maturation is attained now only one is true only two is true both one and two are true neither one and no and two are true तो आंसर कौन हबो बोल से पढ़ो now learning is possible only when a certain stage of maturation is also reached now exercise and training fruitful only when a certain stage of maturation is attained the answer कौन हबार ना आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी हो बोथ वन एंड टू आर ट्रू ओके नेक्स्ट देखो मैच करो मास्लो हेनरी मुरेस आउ पियाजेट तो थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी ऑफ मोटिवेशन थियोरी ऑफ हियरार्की तो ऑप्शन देखो ऑप्शन अनुसार चूज करो ना 1A 2C 3B 1B 2A 3C 1C 2A 3B 1C 2B 3A तो देखो 1 तो ए कंपलसरी समझ जान कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो 3A देखो कोठी अच्छी तो आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन इंपोर्टेंस इन स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ना टीच एंड टेस्ट लर्न फ्रीक्वेंटली एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच लेस anatomy and focus on learners provide constructive feedback to improve तो आंसर आर कौन हम प्रश्न आउथर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन इंपोर्टेंस इन स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन कोड़ा इंपोर्टेंस तार आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी हम ओके प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू इम्प्रूव नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज ना स्टूडेंट रोल प्ले ए स्टूडेंट लिसन टू ए लेक्चर a student follow instruction of the teacher a student copies note from the board तार आंसर कौन हो which of the following is a learner centered activities तार आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स रोल प्ले ओके नेक्स्ट देखो Since classroom normally means a group of the teachers adopts
लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच, इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड अप्रोच. Since classroom normally means a group the teacher adopts. तो ग्रुप गोटे टीचर कौन आडप्ट करेंगे तो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच. ओके नेक्स्ट where the size of the classroom is more the method of teaching is likely to be lecture, discussion, project, seminar. where the size of the classroom more तो क्लासरूम रो साइज होची सबटू बड़ अछि ता से जगह रे कोन करा होची ना मेथड ऑफ टीचिंग इज लाइकली टू बी तो आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए हबो लेक्चर मेथड. ओके नेक्स्ट देखो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर कंडक्टेड टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट takers in relation to one another to determine local standards to measure only emotional disabilities to examine only written abilities. तो standardized test हमर केमती कंडक्ट करा होची तो आंसर कौन हबो जल्दी करो. तो आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए हबो. ओके टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर्स इन रिलेशन टू वन अनदर तो एटा हला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. नेक्स्ट देखो AAL stands for assessment for learning, assessment as learning, assessment of learners और assessment of learning. AAL तो AAL stands for assessment or as learning. ओके नेक्स्ट देखो which of the following test is used to identify the learning difficulties of learners? Portfolio test, stressful test, diagnostic test और probable test. तो से पता है which of the following test is used to identify the learning difficulties of learners. तो learning difficulties of learners हमरा आइडेंटिफाई करिया हेले हमर हबो डायग्नोस्टिक टेस्ट. ओके नेक्स्ट देखो all of the following increases the effectiveness of teaching except a teacher's voice, a teacher's gesture, a teacher's anger, a teacher's appealing personalities. All of the following increase the effectiveness of teaching except आंसर कौन हम ना ए टीचर्स एंगर गोटे शिक्षक राग. नेक्स्ट देखो हु सेड ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटीज प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट. WH किलपैट्रिक, जॉन ड्यू, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद. हु सेड ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट किए कहते आंसर कौन हम ना ना आंसर हम WH किलपैट्रिक. प्रोजेक्ट मेथड कथा आसले आम WH किलपैट्रिक कथा मन रखा. नेक्स्ट देखो which of the following is true according to constructivist perspectives. Now learners became passive participants, learners take care of teaching and learning, learners became engaged participants, learners dilute the learning process. आंसर कौन हम constructivist perspective पाई. तार आंसर हम लर्नर्स बिकेम एंगेज्ड पार्टिसिपेंट्स. ओके नेक्स्ट देखो Piaget suggested that there are four main stages in the cognitive development of the children. Out of that first stage, that is sensory motor stage, is for the age group of 0 to 2 years, 2 to 7 years, 7 to 12 years, 12 years and above. तो sensory motor stage रो एज केते तो sensory motor stage रो एज हैला 0 to 2 years. ओके नेक्स्ट देखो which of the following is not a feature of Bruners theory of instruction. Now structure of knowledge, okay, predisposition to learn, effective sequencing and neglecting the details. Which of the following is not a features of Bruners theory of instruction. तो Bruners theory of instruction रा आमरो आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी होबो neglecting the details. Okay next देखो Carl Rogers approach believes that a teacher must be a facilitator, okay, an authoritarian, okay, an evaluator, a manipulator. आंसर कौन हम ना टीचर सब गोटे
facilitator. Okay, next देखो, the word cognition is derived from the Latin word cognoscere, which means to explain, to lecture, to know, to discuss. तो cognition कथा जदि आसुची आमे कोन कहबा, एटा आंसर हबो कोन, आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी हबो टू नो. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव या कॉग्निशन वर्ड रो अर्थ होला टू नो, आमे जानिबाटा. ओके, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. ना टाइम सेविंग, इजी टू प्रिपेयर, मोर गेसिंग, लेस प्रिंटिंग कॉस्ट. तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप रो क्वेश्चन रो एडवांटेज कोटा ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप रो एडवांटेज होची हमरो टाइम सेविंग टा. ओके, तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, टाइम सेविंग. नेक्स्ट देखो, फुल फॉर्म ऑफ MLL is minimum level of learning, maximum level of learning, maximum life of learning, minimum age life of learning. तो MLL रो फुल फॉर्म कौन हबो ना, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग. तो आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए हबो. ओके, नेक्स्ट देखो, हु गेव द डेफिनेशन टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. ना गेट्स, क्रो एंड क्रो, स्किनर, मून. हु गेव द डेफिनेशन to learn is to modify behavior and experience. तो की क्वेश्चन आर आंसर होची ऑप्शन नंबर डी होची मून क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट देखो, असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट ड्यूरिंग टीचिंग, बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स, व्हेन टीचिंग स्टार्ट्स, आफ्टर टीचिंग. असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर ता हम केतेबेले जानिबा ना, आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, बिफोर टीचिंग स्टार्ट पूर्व आम असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियरटा करवा. ओके, नेक्स्ट देखो, मैच्यूरेशन टा कौन ना, मैच्यूरेशन इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, एन इंड्यूस्ड प्रोसेस, ए नेचुरल प्रोसेस, ए लर्नड प्रोसेस. तो मैच्यूरेशन टा होची हमर गोटे ना नेचुरल प्रोसेस. ओके, आंसर होची ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन द लर्निंग प्रोसेस बिलीव्स बोथ द टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. Teacher centered approach, child centered approach, neither in teacher centered nor child centered approach. तो आंसर कौन हम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टा हमर लर्निंग प्रोसेस रे ना, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टा हमर लर्निंग प्रोसेस रे आंसर होची चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. ओके, नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, बोथ लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच, नाइदर टीचर सेंट्रिक नॉर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टा हमर कौन हम, तो आंसर कौन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग रो ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग रो हमर आंसर हम ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टा होची हमर कौन ना, ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. ओके, नेक्स्ट देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन ए प्रोजेक्ट मेथड एक्सेप्ट क्रिएटिंग ए सिचुएशन, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉम्प्टिंग और प्लानिंग. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन ए प्रोजेक्ट मेथड एक्सेप्ट. तार आंसर कौन हम ना, आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, प्रॉम्प्टिंग. ओके, एटा कौन ड्रामा होची कि, ड्रामा तो नहीं, तो प्रॉम्प्टिंग टा एक्सेप्ट गोटे प्रोजेक्ट मेथड. नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, फॉइडल आउ इंटरवल. तो मेजरमेंट रो कोस्ट कोड ए भितर कोडा गोटे स्केल नुह, तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी होची फॉइडल टा. ओके, नेक्स्ट देखो, ए प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स from Rajasthan may find difficult in relate to the phenomenon of snowfall. This is due to lack of experience, absence of context, lack of interest, teachers efficiency. तो राजस्थान गोटे पिला कौन ना, स्नोफॉल उपर गोटे डिफिकल्टी फिल करुच्ची, स्नोफॉल केमती होची कौन तापर, तो एटा तार कौन हम कहीं से फिल करुच्ची, तो आंसर कौन हम ना, आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी, absence of context. ओके, नेक्स्ट देखो, एनीथिंग दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डूइंग थिंग एंड थिंकिंग अबाउट थिंग्स दे आर डूइंग इज नोन एज एक्टिव लर्निंग, एक्टिव टीचिंग, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव क्लासरूम. तो से कौन देला ना, डूइंग थिंग्स एंड थिंकिंग अबाउट द थिंग्स. तो यहाँ आमर कौन हम ना, आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए हम एक्टिव लर्निंग. ओके, नेक्स्ट देखो, इंक्लूजन इन स्कूल्स एसेंशियल फोकसेस ना, मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर लर्नर्स इन द VIP category. ओके, catering only
to the needs of learners with disability, catering to the needs of financially backward parents in school, fulfilling needs of learners with disabilities in alignment with the entire class. So inclusion in schools essentially focuses on answer कौन होबो ना answer of option number D होबो. Okay, fulfilling needs of learners with disabilities in alignment with the entire class. Okay, next देखो, students are asked to find the kind consumed over a week and tabulate the same in terms of calories and nutritive values. This is an example for project, homework, worksheet, activity sheet. तो आंसर कौन होबो जल्दी करो. तो यहाँ आम आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम प्रोजेक्ट गोटे दिखाई छुआ मान. नेक्स्ट देख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ एन इनक्लूसिव क्लासरूम ना डाइवर्स लर्नर, पीर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन. तो नॉट पचारि तो नॉट है इनक्लूसिव क्लासरूम आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी हम. ओके, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट देखो, व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज वी नोटिस्ड linguistic diversity, socio-cultural diversity, economic diversity और gender diversity. जिते गोटे क्लास रे छुआ डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने नोटिस कले आम से आमर लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट देखो, समेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट administered at the end of a course, are tests that are conducted at the end of a class, involves assessments for learning, of learning, as learning, are assessments that develop good practices. तो समेटिव असेसमेंट आमर कौन ना समेटिव असेसमेंट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इज एन असेसमेंट एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ ए कोर्स. समेटिव असेसमेंट आमर दी प्रकार करुचे गोटे जो भी तीन प्रकार हो मिड टर्म एंड टर्म. ओके, तो समेटिव असेसमेंट आम कौन करुचे ना गोटे षाण्मासिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा करुचे तो यहाँ लास्ट को करुचे. ओके, नेक्स्ट देखो, Raju has scored 65 marks in a particular examination and Rohan has scored 50. Their individual scores are example of measurement, assessment, test और rank. तो आंसर कौन होबो ना आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए मेजरमेंट. ओके, नेक्स्ट देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज गिवन बाय ओके पिरेरी वेनी जॉनसन स्मिथ हेनरी और एडगार डेल. तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस आमर किए देछंदी ना एडगार डेल देछंदी. ओके, नेक्स्ट देखो, ए प्रोसीजर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश द क्वालिटी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी of something special before it is taken into widespread use is known as research, interview, test, evaluation. से पचारला जे ए प्रोसीजर इंटेंड टू एस्टाब्लिश द क्वालिटी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग स्पेशली. तार आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर सी हम टेस्ट. ओके, नेक्स्ट देखो, ए लैंग्वेज टीचर अंडरलाइनिंग वेल रिटन लाइन्स इन स्टूडेंट्स. essay is an example for negative reinforcement, punishing the child, positive reinforcement, teachers lack of concern. तार आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. ओके, नेक्स्ट देखो, ए केयरिंग स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप एंड ए पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट आर क्लियरली इंपोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल ब्लॉकिंग, प्रिवेंटिंग हार्डवर्क, इंक्रीजिंग वायोलेंस. तार आंसर कौन हम ना आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए हम स्टूडेंट्स मोटिवेशन. ओके, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स appropriately defines diversity. ना इट promotes intolerance among people, it promotes discrimination among people, it recognizes and accepts the difference among people, it promotes inequality among people. तो आंसर कौन हम डाइवर्सिटी रो गोटा परफेक्ट हम ना आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी हम इट रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट्स द डिफरेंस एमंग पीपल. ओके, नेक्स्ट देखो, इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर 95% मार्क इन इंग्लिश बट स्कोर 50% नेक्स्ट टाइम एंड 9% द थर्ड टाइम. दिस इंडिकेट्स दैट द टेस्ट लैक्स पॉपुलैरिटीज, लैक्स रिलायबिलिटी, ओके, लैक्स इंटरसेप्शन और लैक्स अफोर्डेबिलिटी.
तो फास्ट थर से स्कोर 95% कला, सेकेंड थर से इंग्लिश रे स्कोर 50% कला, नेक्स्ट टाइम से 90% कला थर्ड टाइम। तो एटा इंडिकेट कौन करुच्ची ना लैक ऑफ रिलायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली फोकसेस ऑन लर्नर्स अचीवमेंट अगेंस्ट फ्रॉम प्रीडिफाइंड आउटकम्स एंड स्टैंडर्ड्स ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट आज लर्निंग ना ओनली सी, ओनली बी, ए बी एंड सी, ए एंड सी। तो राइट आंसर कौन हबार ना राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। ओके, ओनली बी हो ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो ठीक। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग डेफिनेशन, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट operates in an individual's attempt to overcome obstacles or to adjust as given by Gates and others, Crow and Crow, Skinner, Henry P. Smith। तो सठिक आंसर आर कौन हम ना सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हम, क्रो एंड क्रो। ओके, नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टीचिंग लर्निंग इज नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंट्रोल्ड असिमुलेटेड लर्निंग, कॉमन प्लेस टीचिंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग। तो यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टीचिंग लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, तो आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हम, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट ना ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग इन क्लास एक्टिविटीज, ऑन कंटेंट एंड एबिलिटीज, होमवर्क एक्सपीरियंस एज रिव्यू फॉर एग्जाम एंड क्लास डिस्कशन, क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। से पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भीतर कोटा नुह, आंसर हम ऑप्शन नंबर बी, ऑन कंटेंट एंड एबिलिटीज, एटा हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो टूल नुहे। ओके, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन वी यूज नॉलेज टू परफॉर्म मीनिंगलेस टास्क, मीनिंगफुल टास्क, मिनिमल टास्क और मिनिमम टास्क। तो आंसर कौन हम, तार आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मीनिंगफुल टास्क। ओके, नेक्स्ट देखो, असेसमेंट आर इन ए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट दैट इज रिलेवेंट और हैज इमर्जिंग रिलेवेंस टू द स्टूडेंट वाज स्टेटेड बाय यगर, जोहारिक, ब्रुक्स एंड ब्रुक्स, ओके, ऑसबोर्न एंड व्हिटरॉक। तार सठिक आंसर कौन हम, असेसमेंट्स आर इन ए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट दैट इज रिलेवेंट or has emerging relevance to the students was stated by, answer option number C, Brooks and Brooks। next देखो, gangs instructional events have the following learning event except gangs instructional event have all of the following event except gaining attention, avoiding feedback, informing learners of objectives, stimulating recall and previous knowledge। तार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम, अवॉइडिंग फीडबैक। ओके, नेक्स्ट देखो, मैच कर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ए है 7 to 11 years, 12 एंड ऑफ बार टू 2 years, 2 to 7 years। तो सेंसरी मोटर स्टेजटा आमर केते हबो ना जन्म रु 2 वर्ष। देखो एक सी कोटा अछि ना बी आउ डी भितरु चूज करो, एक सी है, तापर प्री ऑपरेशनल स्टेजटा केते हबो, तो सठिक आंसर आर कोडा हबो ना सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी हबो। ओके, नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएशन हेल्प्स इन जजिंग एजुकेशनल पीरियड, कंसेंट, एज, क्वालिटी। इवैल्यूएशन हेल्प्स इन जजिंग, तो इवैल्यूएशन कोडा पई हेल्प करे ना, आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, क्वालिटी पई। ओके, नेक्स्ट देखो, एन एक्टिविटी दैट जनरेट्स ए विलिंगनेस amongst learners to participate can be explained in term of motivation, success, okay, disinterest और frustration। तो आंसर कौन हम यार, an activity that generates a willingness, गोटे आशा उद्रेक करियो, तो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए चाइल्ड इज फीलिंग बोर्ड एंड अंडर स्टिमुलेटेड बाय क्लास एक्टिविटी देन द चाइल्ड इज गिफ्टेड, ए रिटायर्ड, ओके, डेलिनक्वेंट आउ मिसक्रिएंट।
तो सठिक आंसर कौन हम ना चाइल्ड हूँ पिले गिफ्टेड चाइल्ड गोटे ओके नेक्स्ट देख लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द लर्नर्स इज प्रिपेयर टू लर्न रिफर्स टू लॉ ऑफ रिक्रिएशन लॉ ऑफ रीडीनेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट ना लर्निंग टेक प्लेस ओनली व्हेन द लर्नर्स इज प्रिपेयर टू लर्न रिफर्स टू तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम लॉ ऑफ रेडीनेस ओके नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ असाइनमेंट ना पेज बाय पेज असाइनमेंट ट्रॉपिकल असाइनमेंट चैप्टर असाइनमेंट यूनिट असाइनमेंट तो पेज बाय तो आंसर कोड हम नॉट काइंड ऑफ असाइनमेंट ना आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल असाइनमेंट ओके नेक्स्ट देखो ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज टीचर सेंटर्ड पेरेंट सेंटर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी सेंटर्ड तो गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूमटा कौन हम ना गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम सब बेले स्टूडेंट सेंटर्ड हम ओके नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविटी थियोरी ऑफ लर्निंग द 5 इज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एनर्जाइज एनगेज एक्सप्लोर इवैल्यूएट तो कोटा एक्सेप्ट हम ना एक्सेप्ट आमर हम एनर्जाइजटा ओके एनर्जाइज को छाड़ी बाकी 3टा जाक आमर 5 रे जाउची नेक्स्ट देखो लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग इज ए बिलीव्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज कंस्ट्रक्टिविज्म सोशलिज्म ओके फेडरलिज्म आउ ह्यूमनिज्म तो आंसर हम कोड़ा लर्निंग इज ए सर्च ऑफ मीनिंग तो आंसर किए बिलीव्स करछि ना ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए हो चारो सठिक आंसर नेक्स्ट देखो इन टीचिंग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स व्हिच इज एप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल फॉर क्लासरूम ना टेक्स्ट बुक डायग्राम ब्लैक बोर्ड ए मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी इमेजिनेटिव डायग्राम्स तो कोटा एथरू सठिक आंसर हम ना यहाँ आमर हम गोटे मॉडल ऑफ ए ह्यूमन बॉडी आम जदि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पढ़ा तो गोटे ह्यूमन बॉडी मॉडल ने ठीक हम नेक्स्ट देखो लर्नर्स हु हैव ए प्रिफरेंस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग लर्न बेस्ट थ्रू मैप्स इमेजेस टच वर्ड्स learners who have a preference for reading and writing learn best through answer of option number D words okay next देखो inclusive education is based on the ideology change the system to suit the child change the child to suit the system to suit the parents और change the parent to suit the system तो parents तो हबनी तो ए ए बी भितर कोटा गोटे ठीक हम तो कोटा ठीक हम ए ना चेंज द सिस्टम टू सूट द चाइल्ड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो ए साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर्स ए सीरीज ऑफ टेस्ट टू चेक व्हेदर ए चाइल्ड exhibit learning difficulties this is an example for instructional assessment development assessment diagnostic assessment प्रोडक्टिविटी असेसमेंट तो राइट आंसर कौन हबार ना राइट आंसर हबार हम ऑप्शन नंबर सी हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स ओके नेक्स्ट देखो इबेल एंड फ्रिस्बी 1991 सेड दैट द पर्पज ऑफ द इवैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग द क्वांटिटी ऑफ समथिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ समथिंग द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हो द क्वालिटी ऑफ समथिंग ओके नेक्स्ट देखो द डेफिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन साइंटिफिक सेंस मीन्स सम प्रीप्लेक्सिटी इन द एनवायरमेंट और सम अनएक्सेप्टेड और डिफरेंट occurrence which must be explained was given by आंसर करो जल्दी ऑप्शन देखो आंसर करो तो सठिक आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी हो कुलसन आउ स्टोन नेक्स्ट देखो ग्रुप हैज कैटेगोराइज्ड क्लासरूम रिसोर्सेस इन 4 कैटेगरी दे आर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शनल सिंपल कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट कंपाउंड कंप्लीट सिंपल एब्स्ट्रैक्ट कोहेसिव कंपल्सिव आ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो आंसर हम कौन ग्रुप्स रो ऑप्शन नंबर बी हम सिंपल कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट आउ कंपाउंड नेक्स्ट देखो in education assessment is carried out to see what the children know and understand for tracking progress complaining to parents planning next step
तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी ए हम 1 2 4 कंप्लेनिंग पेरेंट्स को छाड़ी बाकी 1 2 4 ये तीन हम। ओके नेक्स्ट देखो सोशल इंटरैक्शन language and the social context all play an important role in an individual's learning. This is a reflection of Vygotsky constructivism, Aurobindo's idea of schooling, world roof system of education, activity based teaching. तो आर राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट देखो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेज एम्फासिस ऑन बिहेवियरिज्म नेचुरलिज्म ओके pragmatism और constructivism। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम। ओके नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल TLM ना चार्ट एंड पोस्टर मैप्स एंड डायग्राम्स ग्लोब एंड स्पेसिमेन फोटोग्राफ एंड कार्टून नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल TLM रे हमर जीवो कोडा ना मैप आउ डायग्राम उडा जीवो। नेक्स्ट देखो in the learner centered method learners are active participants in the process of learning. There is non availability of specialized teachers. Learners became independent learners. Teachers function more as a facilitator. तो learner centered method रे हमर आंसर कोन हबो ना learners there is non availability and specialized teacher काना छुआ छुआ शिखबे तो specialized किस दरकार नै। नेक्स्ट देखो the predominant objective of assessment in schools is assessment of learning, segregating students, identification of disabilities, improvement of infrastructure। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके नेक्स्ट देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर TLM एंड AVS यूज्ड इन क्लासरूम एक्सेप्ट वीडियो फिल्म्स डिक्टेशन ओके पावर पॉइंट स्लाइड्स और मॉडल्स। तो राइट आंसर कौन हम TLM और AVS को छाड़ले ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लासरूम प्रमोट्स पीर एक्सेप्टेंस ना इंट्रोसिव इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव और एक्सटर्नल। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी इंक्लूसिव क्लासरूम टा। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन विथ द आइडियोलॉजीज ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम टॉलरेंस एम्पैथी डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन। तो इंक्लूसिव क्लासरूम रो कोटा नुह ना आंसर डी डिस्क्रिमिनेशन डा नुह। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स आर पेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ईच अदर स्पेलिंग इन ए डिक्टेशन टेस्ट इज पीरियोडिक असेसमेंट क्रिएटिव असेसमेंट इन्वॉल्व असेसमेंट पीर असेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आर पेयर चेक करेंगे तांको भीतर चेक करेंगे तो यहाँ कौन हम आंसर ऑप्शन नंबर डी पीर असेसमेंट। ओके नेक्स्ट देखो इवैल्यूएशन टा कौन ना इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस जजमेंट मेजरमेंट प्लस टेस्टिंग मेजरमेंट प्लस इवैल्यूएशन ओनली मेजरमेंट। तो इवैल्यूएशन टा हो हमर मेजरमेंट प्लस जजमेंट। ओके नेक्स्ट देखो कंटेंट ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग डू नॉट इंक्लूड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नोन टू अननोन एप्लीकेशन टू चैलेंज कंक्रीट टू abstract। तो कंटेंट ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग डू नॉट इंक्लूड ऑप्शन सी एप्लीकेशन टू चैलेंज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो a broader term that refers to all of the methods used to find out what happens as a result of using a specific intervention of practice is assessment measurement test evaluation। तो भल से पढ़ो और आंसर कौन हम जल्दी रिप्लाई करो। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखो द डिजायर टू एंगेज इन एन activity as a means to an end in sight is an example for behavioral motivation self motivation okay extrinsic motivation और intrinsic motivation। तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट देखो कार्ल रोजर्स इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ humanistic approach of learning development of the whole person new age psychology experimental psychology। तो कार्ल रोजर्स इज also known in the field of option A humanistic approach of learning। next देखो what is a recommended strategy to support gifted and talented learners in the classroom ना popcorn classroom strategy group them with other gifted learner keep them busy avoid their question।
तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ओके, ग्रुप देम विथ अदर गिफ्टेड लर्नर्स। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ असाइनमेंट्स? ना टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू वर्क एंड प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एंजॉय द leisure time, to develop a habit of reading regularly among the students, to provide remedial measure for backward students। तो ये कोटा असाइनमेंट गोटे पर्पज नुह, तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ओके, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एंजॉय द लीजर टाइम। नेक्स्ट देखो, मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग द डिग्री टू व्हिच समवन ऑफ और समथिंग possessed a given trait, that is quality, characteristics or feature set। तो ये किए कहते आमर नार आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। इबेल एंड फ्रिस्बी 1991 रे कहते क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलरेडी 3टा क्वेश्चन या पढ़ला 100टा भितर देखि नब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोजेक्ट 3 डायमेंशनल टीएलएम? तो चार्ट एंड पोस्टर, मैप एंड डायग्राम्स, ग्लोब एंड स्पेसिमेन। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल। तो राइट आंसर होची यार ऑप्शन नंबर तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी हो, मैप और डायग्राम। ओके, एटा टाइपिंग मिस्टेक अच्छी, तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखो, द डेफिनेशन लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर वाज गिवन बाय। तो एटा किए कहते आमर ना एटा कहते आमर ऑप्शन होची आंसर न होची गेरेट। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस? ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फ्यूजिटिव इवैल्यूएशन। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमरो, मोंटेसोरियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन अडॉप्ट्स among several methods a set of activities that children can engage themselves in. This is an example for a learning that is teacher centric, objective centric, activity centric, learner centric। तो मोंटेसोरियन सिस्टम एजुकेशन टा होची लर्नर सेंट्रिक। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन थिला एटा हमर। तो जदि आशा करूँ भिडियोटी समस्त पढ़ा उपयोगी रहिबो, आपनर एग्जाम रे एई टाइप रो क्वेश्चन ही आसीबो, एई भितरु भी किछि क्वेश्चन आसी पारे आशा करूँ। तो भिडियोटी जदि तुम मानू भल लागुची चैनल को सब्सक्राइब करो एवं भिडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करो। आ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी, जाई जॉइन हो। धन्यवाद।